ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपेरिमेंट। सो गाइज, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हमारे टोटली एक्सपेरिमेंट से बहुत ही डिफरेंट होने जा रहा है। आज हमारे हाथ में मौजूद है ये अनार, जिसको आपने यूज़ किया होगा डिफरेंट फंक्शन में, शादी ब्याह की तकरीबात में, लेकिन हम आज इसको किसी भी तकरीबात में यूज़ नहीं करेंगे। आज इस अनार के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सिंपली हमारे पास यहाँ पे मिरर का एक पीस है और उसके नीचे हमने इस अनार को रख दिया है, और जब हम इस अनार को आग लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इस अनार का और इस गिलास का है वो रिएक्शन क्या होता है, तो उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वलीद स्टूडियो चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, लाजमी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इसको आग लगाते हैं। 3, 2, 1। वीडियो तमाम दोस्तों की निगरानी में बनाई गई। इस वीडियो में हिफाजत का पूरा ध्यान रखा गया। आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आपने रिएक्शन देखा कि इसने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, इतनी इसकी पावर थी। तो जैसे कि आपने देखा जो कांच है इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो ऑलराइट गाइस, बात बताने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी मिरर को किसी हीट वाली चीज़ के ऊपर रखें, जब भी हम किसी मिरर को किसी हीट वाली चीज़ के ऊपर रखें, तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। हम आपको मुकम्मल डिटेल में इसको दिखाएंगे, स्लो मोशन में भी और फास्ट मोशन में भी और रिवर्स करके भी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट अच्छे से एक्सपेरिमेंट में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।